your scope. See, for Chaitanya program, you should be very clearly able to. Yes, for Chaitanya program, you should first try to identify the households in which you are working. Your voice is breaking, ma'am, like again. Yeah, that's what. Is it fine now? Yeah, ma'am, it's getting better. Okay. So I was telling that in the Chaitanya program, it's important that you identify the households. And after you identify the households, then you should do a visit to that house every alternate day, or maybe once in 3 days or once in a week. And you should try and sit with those people and do some group discussions with the families, with the kids, to motivate them to continue their education and to continue their education with a better quality, like investing more time in that education, in those studies. तो इसको एक मेजर पोर्शन रखिएगा. ये एक डिफिकल्ट टास्क है. आप बहुत आसानी से किसी ऐसे बच्चे को जो ड्रॉप आउट कर गया है उसको स्कूल में लाना मुश्किल है. But if there is something, you put your time and effort into it, it is possible and it can change that child's life. So you should मतलब चैतन्य के लिए उस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं. The second, which is a very good this thing which we are doing, is the book discussion वाला जो section है. In that, we basically wanted to develop the habit of reading. So when you read a book, sometimes you might just forget कि क्या पढ़ा था, or it might be a story, it might be a non-fiction, anything. So for that, I thought कि हम लोग एक group discussion day या कुछ group discussion book discussion की sessions रख सकते हैं, जिसमें we will first give a list of the books and then we will give 15 days. And after 15 days, we all can have a discussion on that. So that book can be anything and from any area, any specialization. और उतना समय I think 15 दिन किसी भी किताब को पढ़ने के लिए पर्याप्त है और ज़्यादा ही है. जो बुक रीडर्स रहते हैं वो तो I think बुक के साइज पे डिपेंड करता है, बट विद इन अ वीक उससे कम टाइम में निपटा देते हैं. बट 15 days इज मोर लेस अ गुड टाइम. तो हम एक लिस्ट दे सकते हैं, उसको क्लास वाइज या सेक्शन वाइज या फिक्शन नॉन फिक्शन कैटेगरी वाइज डिवाइड करके हम अलग अलग फोर्टनाइट की लिस्ट देके उन पे डिस्कशन कर सकते हैं. सो इनसे हमें उस बुक के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को जानने का मौका मिलेगा. अ सिंगल बुक कैन बी इंटरप्रेटेड by different people in different ways, and that is what knowledge is, that how you interpret the given information, the given arguments. So I think this will be a good forum where सभी लोग अपनी किताबों को डिस्कस कर पाएंगे और we'll exchange our viewpoints and we'll get to know कि how a single book can be interpreted in different ways. So that is one. And इसके अलावा प्रियांशु, what else are the programs? So मैम बेसिकली लाइक इसके अलावा सर्वे होने वाला है. बेसिकली इट विल बी रिलेटेड टू द अवेयरनेस कैंपेन. मतलब पहले उनकी परेशानियों को समझने का टारगेट रखेंगे हम लोग. प्रॉपर जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब दिक्कत कहाँ पे आ रही है, उसके हिसाब से फिर अवेयरनेस कैंपेन करेंगे. और उसके अलावा कैरियर गाइडेंस मैम, बिकॉज 3 टाइप के आपने बताया कि अलग अलग हाउस होल्ड्स होते हैं. तो अलग अलग हाउस होल्ड्स में से गाँव का जो बच्चा होता है उसकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं. जो स्लम का बच्चा रहता है, सिटी के स्लम में रहता है, उसकी प्रॉब्लम्स अलग रहती हैं. और एक ऐसा बच्चा जिसको रिसोर्सेज मिल पा रहे हैं, उस घर वाले पढ़ा भी रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं. तो जो थर्ड वाली कैटेगरी होती है, जो ये बच्चे जब आगे पढ़ेंगे तो जो कैरियर गाइडेंस की जो प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए फिर अपन ने सेशन रखा. Yes, career guidance session is also very important. What happens is that at some point in time हमें बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस पता रहते हैं कि जैसे इंजीनियरिंग कर लिया, आईआईटी दे दी, नीट दे दिया, एंड देन मे बी डॉक्टर या इंजीनियर, दैट्स दी ओनली होता है जो हमारे पास. कई बार हमें कोर्सेज तो पता रहता है कि लॉयर, लेकिन पता नहीं रहता है कि लॉयर बनने के लिए क्या एग्जाम देनी पड़ेगी, क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो अगर पुलिस में जाना है या फिर आर्मी में जाना है, डिफेंस फोर्सेस में जाना है, डिजाइनर बनना है, स्पोर्ट्स में जाना है, तो वी डोंट हैव मच आइडिया. या इवन एंटरप्रेन्योर अगर बनना है एंड you want to start your own enterprise, and instead of getting a job you want to give and create jobs, so we are not much aware. So we can do a career guidance session in which we can invite people from different fields who will share their experiences of how they got there, and these all will be young people जो बहुत recently exams crack करके वहाँ पहुंचे होंगे.
So I think एक बहुत array of अलग-अलग वो मिलेगा हम सब बच्चों को, सारे students को. और फिर कैटेगरी वाइज उन स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग सेशंस भी कर सकते हैं, जिसमें डिटेल एक पर्टिकुलर प्रोफेशन पे फोकस करके हम डिस्कशन कर सकते हैं. इसमें स्पेशली ये भी ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चंस रहेंगे उन पे भी फोकस करेंगे. कई बार कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो बच्चे पूछना चाहते हैं बट छूट जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन आस्क फॉर क्वेश्चंस एंड देन those topics can be covered in the career guidance session. So kahin na kahin sarva shiksha like this one campaign is trying to create awareness about education, also focus on the books. So we have collected books and now we'll be inaugurating libraries. I'm sure Priyanshu, in the coming I think 30-40 days we should be able to launch at least 2 to 3 libraries. And yeah mom, that will be done mom, for sure. Yes. So mom, like in Fazilka the library is almost ready, and even in Dhanbad like those IIT people have started making the structure and all. So those 2 libraries can be inaugurated, and also Chichle library is yet to be inaugurated. So those 3 libraries can be inaugurated by this month, mom, in April or May. Sure, that sounds really great. Yeah, and we can also have a live session so that we all see that library that we will be creating by the books that we were able to create by the support of all the people. So us tarike se bhi hum kar sakte hain. So to all the volunteers who are here of Ashray with us, I would like to give you all the very best in whatever areas you're working. You should be selecting any of the activities or all of the activities, and you can make a schedule of yours कि आप अपने particular city या फिर village में town में किस प्रकार की activities कब कब कराना चाहते हैं. You can connect people in advance, you can inform the kids, you can connect with schools, especially like for career guidance sessions you can connect with schools. Even the teachers will be very I think they will support you in this venture. And even for the book discussion sessions, those can be both offline and online. And for Chaitanya, I think it's all offline work. We will just get to see the photos, but the real work is something which you have to do on ground. So all the very best to all the volunteers. And we will again have a review session after a month, I think, Priyanshu, so we can see what are the difficulties which you are facing, and we can also talk to the volunteers about their experience. Yes, mama. As of now, like all the people are working like all the time because we need to start it. So yeah, I'm surely like after some time we can have a review session, also a feedback session. And ma'am, like I want to add one more line in this campaign. So basically, this awareness campaign, it is not only for student or not only for the parents of that student, but also for everyone. Because अभी क्या होता है कि मतलब जैसे किसी को समाज सेवा करनी होती है, फिर से किसी के बारे में सोचते हैं तो उन्हें खाना दे देते हैं, या फिर कपड़े दे देते हैं, या फिर स्लीपर्स वगैरह दे देते हैं, बाकी जो मतलब चीजें दे देते हैं. बट एक लाइन आई थी मतलब बीच में किसी वॉलंटियर ने बोली थी कि भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए. तो उसके लिए मतलब था कि आप खाना दोगे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, बट अगर शिक्षा हम किसी को दे देते हैं तो वो खुद में कैपेबल हो जाता है फूड को लेने में भी और क्लॉथ को लेने में भी. तो हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ वॉलंटियर्स ना जुड़े, सिर्फ पेरेंट्स ना जुड़े, सिर्फ उनके स्टूडेंट्स ना जुड़े, बट एक तरीके से सभी लोग जुड़े जिनके घर में जो लोग काम करते हैं, जो उनकी हेल्प कर सकें, जो बुक हमको डोनेट नहीं कर पा रहे हैं वो आपस आस पास जिनको जरूरत है उनको दे पाएं. जो किसी अपार्टमेंट में रहते हैं वो अपने अपार्टमेंट में रहने वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं. किसी सिटी में जहाँ हम प्रेजेंट नहीं है बट उनके आसपास अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई की जरूरत है, उनको अगर वो पढ़ा पाए, तो इस तरीके से एक सोशल इनिशिएटिव इसको नाम दे सकते हैं हम, एक सर्व शिक्षा करके, कि जिसमें आप जहाँ भी हैं, आप अपने लेवल पे जहाँ भी आप मतलब कर सकते हैं शिक्षा के लिए, आई थिंक उन्हें वो मतलब करना चाहिए. बिल्कुल, आई थिंक यू समड अप इट वेरी वेल प्रियांशु. एंड जो भी ग्राउंड वर्क आपने पिछले महीनों में किया है, दैट इज शोइंग अप, and I'm really happy for you, and I'm really happy for the entire team that you have been able to put something like this together in such a short time. Like we were doing our Shakti week, and right after Shakti week आप लोगों ने ये सर्व शिक्षा का concept पे सोचा. So I congratulate the entire core team of Ashray for coming out with this wonderful initiative. And this is a long one, right? How long are we putting this up for? Basically, it is for 3 months, but we will extend it in some areas depending upon the feedbacks that we will be receiving in the service now. So it is minimum 3 months. Correct. So we are starting with a 3-month timeline, and I'm sure that we will review it midway, so we can make the corrections that are required for it.
So again, congratulations to you, Priyanshu, and to the entire core team of Ashtray for launching something so important for us right now. इसमें एक और हम डिजिटल एजुकेशन को लेकर के भी थोड़ा हम डिजिटल लिटरेसी भी स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारा एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होता है और कई बार नॉलेज नहीं रहता है. तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का नॉलेज भी जहाँ पे भी जाए, बच्चों को थोड़ा मोबाइल्स में किस तरीके से हैंडलिंग करना है या लैपटॉप्स में कैसे लॉग इन करना है, ये सारी बेसिक चीजें भी सिखाएंगे. तो आई थिंक डिजिटल लिटरेसी कैन बी एनहांस्ड, राइट? Surely. I think volunteers are already listening, so they will be adding in the curriculum for sure. Okay, that's great. Okay, and thank you, ma'am, for guiding us all the time. Like sometimes we feel problems, and like when we share to you, and your advices really helps us. So thank you for that, ma'am. Like thank you for mentoring us so well. No, I'm always there, and it makes me really happy to see your growth. And I congratulate all of you again, and we'll keep meeting. All the very best to all the volunteers, and let me know how it goes. Surely, ma'am. We will keep you updated, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Goodbye. Thank you. Bye, ma'am. Thank you.